हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन एंड वेलकम टू RJ360। आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ EMI। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज 12,300 is borrowed at 5% compound interest annual and paid back in two equal installments paid at the end of first and second year respectively. What is the amount of each installment? So we are going to learn two methods to solve the concept of EMI. Let's look at the method number one. So let the installment be, so initial amount था 12,300। अब ये अमाउंट एक साल बाद 5% से बढ़ जाएगा, so it will become 12,300 into 1.05। अब अगर ये 1.05 कैसे आया आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारा पुराना वीडियो परसेंटेज एज अ मल्टीप्लायर आप देख सकते हो। so 12,300 into 1.05 ये हो चुका है पूरा एक साल बाद का अमाउंट। अब मैं मेरी पहली EMI दूंगा, इसमें से मैं जितना भी मेरे ऊपर लोन बचा है उसमें से ई कम हो जाएगा। बैंक क्या करेगा, जितना मेरे ऊपर रिमेनिंग है उसके ऊपर चार्ज करेगा। सो लेट्स पुट दिस अमाउंट इनटू ब्रैकेट। अब जितना कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर 5% चार्ज होगा। सो दिस अमाउंट विल बिकम इनटू 1.05 एट द एंड ऑफ 2 years। अब जब मैं बैंक से पूछने जाऊंगा कि भाई मेरा 2 साल बाद कितना लोन है बताओ, मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट देके पूरा कर देता हूं, तो जितना कुछ भी लोन बचा है दैट इज इक्वल टू माय सेकंड इंस्टॉलमेंट, सो व्हिच इज इक्वल टू ई। नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ ई। सो 12,300 into 1.05 minus e into 1.05 is e. What is the value of 1.05? It's a 21/20. So taking this e into 21/20 on the right hand side, I will be left with 12,300 into 21/20 is e plus 20/21 into e. Solving this will get 12,300 into 21/20 is 41/21 into e, or e will be 6,650. You can cross check with the help of calculator. Let's understand in detail what is happening in the concept of EMI. मैंने 12,300 का लोन लिया 1 जनवरी 2018 को। बैंक उस पर 5% चार्ज करेगा विच इज 615। तो ये जो है 1 जनवरी 2019 को 12,915 हो गया। अब मैं मेरी पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा था जो कि मैंने निकाली है 6,615 की। तो अगर मैं ये इसमें से माइनस करता हूं तो बैंक मुझसे कहेगा सर अब आपके ऊपर टोटल लोन 1 जनवरी 2019 को बचा है 6,300। अब ये जो अमाउंट बचा है बैंक इस पे 5% चार्ज करेंगे पूरे साल का विच इज 315। सो जब मैं 1 जनवरी 2020 को जब पहुंचूंगा बैंक में कि मेरे ऊपर लोन कितना हो गया, तो दे विल से सर इट्स 6,650 which is equal to my second EMI. So I'm going to pay this and will clear my debt. So first method says कि भाई आपके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप चार्ज करो, पहली EMI भर दो, ब्रैकेट में डाल दो, जितना कुछ बचा है उसके ऊपर और चार्ज करो, ब्रैकेट में डाल दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट भरो एंड यू कैन कंटिन्यू। डोंट वरी, विल लुक एट अप टू 4 इंस्टॉलमेंट इन अपकमिंग एग्जांपल्स। लेट्स डिस्कस मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कहती है कि इक्विटिंग फ्यूचर वैल्यू। मान लो मैंने लोन लिया है HDFC बैंक से, अब भरना भी HDFC में चाहिए था, मैं गलती से ICICI बैंक में पैसा डालता हूं। तो 1 जनवरी 2018 को जो मैंने 12,300 का लोन लिया था उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2019 को हो जाएंगी into 1.05 एंड एट द एंड ऑफ 2 year इट विल बिकम 12,300 into 1.05 का स्क्वायर। ICICI बैंक में जो मैं पहला इंस्टॉलमेंट भरूंगा 1 जनवरी 2019 को, ICICI बैंक उस पर मुझे इंटरेस्ट देगा 5% का। सो उसका जो वैल्यू है जो पहली इंस्टॉलमेंट भरी थी विल बी e into 1.05, और जो मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो मैं देने वाला हूं एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर उसके ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं 1 जनवरी 2020 को अगर सारी वैल्यूज इक्वेट करूं तो जितना HDFC के ऊपर मेरा लोन हो चुका है उतना ही ICICI के पास मेरा क्रेडिट होगा। सो 12,300 into 1.05 का स्क्वायर इज इक्वल टू e into 1.05 प्लस e. So let's solve this. 1.05 is nothing but 21/20 and e plus 21/20 e. Solving this will get right hand side as 41/21 e. Now 41 ones are, this will be
300. 20 and 20 gone. So my final answer has to be 300 into 21 divided by 20, or this will become 50. So 21 ka square is 441 multiplied by 15 is 6650. So yes, this is our second method in which we are going to equate the net future value. So let's solve this example with both the methods. Couple took a loan of 16,800 at compound interest at 10% per annum. He repaid the entire amount in 2 installments. What is the value of installment? So पहली मेथड क्या कहती है, 16,800 का लोन 10% का इंटरेस्ट जोड़ेंगे, फिर मैं मेरी पहली EMI दे दूंगा, जितना कुछ भी बचा उसको अगेन 10% इंटरेस्ट जोड़ के दैट इज इक्वल टू माय सेकंड इंस्टॉलमेंट. So yes, let us solve this. 16,800 into 1.21 is equal to this 1.1 E. If I take on the right hand side, it will become E into 1.1 plus E. So 16,800 into 1.21 is equal to 2.1 E. So my E will become, now I'm going to use my calculator. So 16,800 into 1.21 divided by 2.1. So it comes out to be 9,680. So this is the installment. फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या हो रहा है. प्रिंसिपल उस पर इंटरेस्ट जोड़ा, अब मैं मेरी पहली EMI पे कर दूंगा तो जितना भी लोन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. अब बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ेंगी विच इज I2 एंड दिस इज इक्वल टू माय नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड आई एम गोइंग टू क्लियर माय डेट. दिस वाज मेथड नंबर 1. नाउ लेट्स लुक एट मेथड नंबर 2. उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 16,800 पर 2 साल का इंटरेस्ट 1.21 विच इज इक्वल टू जो पहली इंस्टॉलमेंट दी उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट दी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं. सो इट्स 16,800 into 1.21 which is equal to E into 2.1. If you look at both the equations are one and the same. You are comfortable with any method, you should go with that. So second method में principal उस पे 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ लिया I1 I2, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 1 साल का इंटरेस्ट और दूसरी इंस्टॉलमेंट. So P plus I1 I2 is equal to E plus E I1 and E which is shown in this. So yes, answer comes out to be 9,680. Let's move to the next example. This was CAT question. Johnny borrowed 2,10,000 from a bank at a interest of 10% per annum. So he paid at the end of first and second year, then the value of each installment B. So I'm going to directly apply the method 2. 2,10,000 is per 2 साल का interest which is equal to first installment into 10% plus second installment. So 2,10,000 into 1.21 is E into 2.1. I can cancel this as 1 lakh. 1 lakh into 1.1 is 1,21,000 is the EMI. As you can see, I have solved this question within 30 seconds. This was CAT 2018 questions. So let's move to some difficult example. Okay, and paid back in 4 equal yearly installment. 4 installments दी है, ठीक है. So I'm going to use method 2. 4,600 410 4 installments. So it's a 1.1 raised to 4 that is equal to पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 साल का इंटरेस्ट, दूसरी इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का इंटरेस्ट, तीसरी इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का इंटरेस्ट और चौथी इंस्टॉलमेंट. So let's again solve this with the help of calculator. So 1.331 plus 1.21 plus 1.1 plus 1. So right hand side is 4.641. So yes, so E into 4.641 which is equal to 46410 into 1.1 raised to 4.
So yes, this will cancel out to be a multiple of 10,000, and 1.1 raised to 4 is 1.4641. Multiplying this will get E as 14641. अब ये अगर आपको डायरेक्ट कैसे आया, तो you can watch my first video of SICI. In that we have explained this, what is 1.1 raised to 1 square cube and whole that. So my installment is 14,641. So as you can see, 4 भी इंस्टॉलमेंट दी, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो. आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल, सो क्लियर ऑल द डाउट्स. A sum of rupees P was borrowed and paid back in 2 equal installment of 3600. If the rate of interest was 20%, then the value of P is. क्वेश्चन खुद दे रहा है कि आपने इंस्टॉलमेंट 3600 की दी, तो आपने लोन कितना लिया होगा. सो अगेन सिंपल मेथड, P into 2 साल का इंटरेस्ट यानी 1.44 विच इज इक्वल टू 3600 की एक इंस्टॉलमेंट पे 1 साल का इंटरेस्ट और दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर दे रहे हैं. सो P into 1.44 is, so now I'm going to solve this with the help of calculator. $3600 into 1.2 plus 3600 divided by 1.44, which is going to give me 5,500. So P is 5,500. यानी मैंने जो लोन लिया था वो था 5,500 था. Thank you.